Assalamu alaikum everyone, this is Abaha and welcome to my live session. So I'm just taking the live session early today for the simple reason कि अभी Eid ख़त्म हुई है and still there might be a lot of you who are still on their Eid holidays and some might not even want to come live for the session and many other things. So अभी भी जो है ना ईद ख़त्म होने के बावजूद भी बहुत से लोगों के घरों में अभी भी ईद का समा ही है. So I just wanted to have this live session and today's session it's firstly I wanted to wish all of you a happy belated Eid and then I hope all of you must have had a fabulous Eid and you must have remembered everyone in your Eid Qurbani. So now let me just go on different platforms and check who's live with me so I can just start with the session. And in the meantime, those of you who are watching me already, you can let me know what this topic is about or if you can complete the code. So I'll be waiting for your comments and I can see Mansoor Ahmad Tareen. Okay, thank you so much for joining. Okay, yes, the topic I mentioned the topic in the description and it's not the whole of the topic. It says it's something like that hard work is not dash, so you have to complete the sentence. Okay, Anwar Masi, thank you so much for joining and watching this session. So let me see. Yeah, so I'm just going to complete the quote. If you people cannot guess, well, the quote is hard work does not always equal to success. Well, that's the topic I aim to discuss about it, and let's see what suggestions and what comments you have or what you can describe it as. Like, what do you think it is it true? Well, is this true that hard work is not always equal to success, or hard work and success are interchangeable or they're interpersonal? So whether you use hard work or whether you use success, it's the same thing. So it's totally up to you. So it's just whatever is in your mind, you can let me know. Okay, so well, I'm just going to see, and I just let me just see if my voice is not rebounding back. Okay. Yeah, earlier I was thinking that there's some kind of light issue, but I think I'm quite already quite gleaming with light, so I don't have to add any extra light. That would be sufficient. Okay, so let's start with the topic. Okay, well, you know what, basically I wanted to discuss that what are the other factors which are important in order to be successful. Iqbal Zarkash, thank you so much for your compliment. So you know what, when we look at hard work and when we look at success, it's not necessary that if you're working hard you can gain success, because there are certain factors which are associated with hard work, and if you want it both hard work and success to complement to each another, then you have to keep in mind these factors as well, because necessarily not always hard work leads to success and not necessarily success always come from hard work. So you have to analyze this, what makes what successful and what's the real connection or correlation between the two. So when we look at if we try to analyze it, well, I think luck and opportunity, it plays a major factor in your success, in fact anyone's success, because there are times like a person or a student or an individual, they might be working very hard, but their hard work is not getting them any success, or it's not bringing them those results which they think or they thought it would while they're working. So in this scenario we have to look at the factors. Now luck can be one factor, cause luck it showers on people. Yes, it showers equally, but then you have to see whether you are in that right moment or you are in that right circumstance, or whether you are able to grasp that opportunity, because luck and opportunity we do not come across it very very regularly. So it's just that when we
get an opportunity, so instead of just thinking about it, just get a hold of that opportunity. Don't think that I do not match this opportunity, or even if I apply, what if I'll face failure, this and that. So don't let the negative energies come into your mind. Just go and apply for that opportunity, and you never know, maybe that opportunity is right for you. But then again, if you keep on thinking about the things that this opportunity is not for me, or maybe my skill is not according to this, like, you can upgrade your skills, you can keep on learning. It's a lifelong process. You can never say that I have learned enough and I don't need to learn anything else. So you keep on learning. That is the good thing about learning and lifelong learning. You keep on learning and you keep on improving yourself. Even those people, those who are CEOs. So they are continuously in this habit of transforming and learning new skills, learning things related to their own skills or their own expertise or their own subjects, but still they are learning many other things. Like now, if you see, if you have ever had the experience of working in a school, like I had one of these experiences, and what I learned over there was that those who are in the head positions, or those who are the admins or the coordinators, they're multitasking. They are not just they are not just the admins in the admin sense, rather they are doing so many things, so they have to keep themselves updated. So in the same way, when you are working in any environment, like if I work as a content writer, I would not just be focusing on content related stuff. I would be focusing on it all depends on my mental capability as well. Like I would not just be focusing on the content area, I would rather be looking it from the digital marketing point of view, or from the point of view that whatever I am writing, is it bringing fruitful results, is it organic, is it paid, is the campaigns which are being launched side by side by the social media personnels, is it according to the ads or the content. So you have to keep in view each and everything, and that does not mean you just have to become stagnant to one particular skill. In that particular field, there are many other areas where you can focus on. So that's what I mean by continuous lifelong learning. You keep on learning. Okay, in the meantime, let me see Sajid Bajit, thank you so much for joining and watching this session. So this is where luck and opportunity comes in. You have to look out for the opportunities, don't just miss it, because you have often heard this saying that the opportunity knocks once at the door, or it's random, or it's rare whether it knocks twice. Well, I think you can turn anything into an opportunity, and you just have to know, you have to trust your gut, and you have to trust yourself. Okay, this is the opportunity for me, I got to take this opportunity. So वो जो डर है, वो जो खौफ है, वो जो fears हैं, वो जो एक reluctantness है कि भाई मैं जो हूँ I'm not good enough. So get this thing out of your mind. You are not good enough. Have this thing in mind. I am good enough. I am sufficient. I am enough. And I can do it. जब आप जो है अपने आप को ये discover करना शुरू कर देंगे ना, you are good enough for anything, तो everything is going to become easy. So फिर ये जो है good luck और opportunity, ये भी आपको जो है ना बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगेगी. You'll just think it's something regular. Because what often I have seen that people keep on running after success. Like success, it's not something कि भाई आप उसको measure कर सकें in something definite terms. Like success is different for everyone. For me, it might be totally different. For you, it might be different. For many people, it might be measurement in terms of monetary sense. Yes, monetary does matter in to a certain extent, but that does not mean कि monetary के पीछे जो है आप अपना दीन ईमान बेच दें. You just get rid of your ethics. You just forget your values. So you are not going to do that. You have to keep your values and your work professional side by side. क्योंकि जब ये side by side होगा तो then these things are going to align with your goals and your mission. Okay, Emma Rauf, thank you so much for your compliments. Thank you. I'm humbled by your compliment. Thank you. Okay, so now coming next to our next point, that is you'll always find equities and you'll always find systemic barriers. अब वो किस तरीके से हो सकता है,
like systemic issues and barriers and biases, they're always there, and it can often prevent anyone who's working hard to reach their maximum heights or to fulfill their goals when there are these barriers and these biases. And though many people are not going to admit to it कि, yes, there are biases, but yes, I know the inside there are biases, and as an individual you need to work on breaking those barriers. And you can break these barriers. And how you can break these barriers? भाई जब आपके पास वो टैलेंट होगा, वो स्किल होगी जिसके लिए जो है मार्केट में जो है कमी होगी, so then people are going to come after you, they are going to run after you, and then is going to be your time to avail that opportunity. Opportunities किस तरीके से avail की जाती हैं? Opportunities यानी मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह पड़ी होती हैं। आप एक पत्थर उठाएं, आपको 10-10 अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, बट आपको वो देखने वाली आंख भी चाहिए। हो सकता है आप अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, लाइक जस्ट टेक इट फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो डिजिटल मार्केटिंग है, इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। नाउ व्हाट पीपल डू इज़ दे कीप ऑन रनिंग आफ्टर बिग बिजनेसेस और बिग टाइकून्स टू ऑफर देयर सर्विसेज टू regarding digital marketing. बट ये है कि आप अगर ये देखिए, जस्ट गो ऑन द बेस लेवल पे भी तो बिजनेसेस है ना। देर आर बिजनेसेस हु वांट पीपल टू वर्क ऑन देयर बिजनेसेस, हु वांट सम recognition. They won't be having those kind of skills. So you as a digital marketer, you need to go and talk to those people, improve your communication skills, and then see what is lagging in their business, what services you can offer. So market हर एक ही है, चाहे वो जो है छोटी मछली है या चाहे वो बड़ी मछली है, हर एक की मार्केट है। यू जस्ट नीड टू ओपन योर आईज, यू जस्ट नीड टू एनालाइज, और मार्केट आपको हर जगह मिल जाएगी। हम जो है इस वक्त क्या करते हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट के पीछे भागते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से डॉलर आएंगे। ओके ठीक है, डॉलर आएंगे, बट देन जितने जो है रिप्यूट ख़राब हो रही है regarding our country due to some people who are not professional, who do not practice those work ethics. Again, they're amateurs, they don't know कि भाई अगर आपको project मिलता है, how you are supposed to talk to the client, how you are supposed to get the project, and once you get the project you need to give those deliverables. क्योंकि like if you take it from a professional point of view, दो इट्स राइट, पीपल जो है पाकिस्तान में भी बहुत प्रोफेशनल होते हैं, बट देन अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ आपको नहीं छोड़ेगा। वो अगर उसने आपको कहा है ये डेडलाइन है, येस, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब आपका जो है काफ़ी उनके साथ जो है एक लिंकेज डेवलप हो जाए, आप काफ़ी अर्से से उनके प्रोजेक्ट्स पे काम करें, यू हैव अ गुड स्कोर, यू हैव अ गुड रिव्यू, देन यू कैन आस्क फॉर सच फेवर्स 1-2 दिन की। बट ये भी नहीं कि महीने जो है आप प्रोजेक्ट लेकर जो है बैठे रहे हैं और महीने के एंड में जो है आप कह रहे हैं कि जी अब टाइम दे दें, या डेडलाइन सर पे है तो आप जो है मैसेज करने बैठ जाएँ कि जी ये आज मुकम्मल नहीं हो सकता, या मेरी बिजली बंद है, या फलाना मसला है, या धमकाना मसला है। सो प्रोफेशनल वर्क एथिक्स हैव टू बी देयर इज़ सिंपली नो लीनियंसी। आप जो है अपने आप पे तो जो लीनियंसी आपने करनी है, बट व्हेन इट कम्स टू वर्क यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट कोड, प्रोफेशनल कोड, एंड you have to work by it. Okay, so these are regarding inequities and systemic barriers कि आप किस तरह इनको overcome कर सकते हैं. And then you also have to consider the industry and market conditions. जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हर जगह मार्केट होती है, हर जगह conditions जो है वेरी करती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अब जो सिनेरियो है, ड्यू टू सम पीपल, ड्यू टू देयर immature attitude या amateur, या ड्यू टू not knowing the skills, the perfect skills या expert skills जो आपको required है, I won't say कि भाई आपको जो है टेस्ट नहीं करना चाहिए। yes, आपको अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, go and practice those skills with any organization. if I think कि भाई I have some kind of skill जो कि बेस लेवल पे है, and I need to go and work in some organization, मुझे कोई आड़ नहीं आएगी, provided someone hires me and they are they accept this कि ओके ठीक है ये आए और हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर लें। बट देन
बहुत से लोग होते हैं उनके फर्स्ट माइंड में ये होता है कि ओके भाई ये स्किल लर्न कर रही है, अब इससे पैसे कमाने हैं। पैसे तो आपको आएंगे बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आपका जब पोर्टफोलियो होगा, आप जब किसी के लिए काम करेंगे, उनको कुछ आप शो करेंगे, कुछ आपकी एक ऑथेंटिसिटी बनेगी, एक क्रेडिबिलिटी बनेगी। जब क्रेडिबिलिटी बनेगी तो वो क्या, और ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको अप्रोच करेंगी। सो यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ एंड यू हैव टू ट्रस्ट योर कैपेबिलिटीज़। और अपने तो कैपेबिलिटीज़ को आपसे ज़्यादा और कोई नहीं ट्रस्ट कर सकता। बट देन इन कैपेबिलिटीज़ को ट्रस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। ओवर कॉन्फिडेंस, जब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे देन यू विल फेल टू सी इफ़ यू आर लैगिंग समथिंग, और या आप में कोई फ्लॉ है। सो यू हैव टू कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग, कीप ऑन एनालाइजिंग योर सेल्फ कि आप में जहाँ गलती है आप उस गलती को ओवरकम करें, ना कि जो है ना ढीठ बन के उस पर अड़ जाएं कि नहीं भी मेरे में कोई गलती नहीं है। ओके, सो like okay, so another point is regarding resource availability. Again, access to resources like capital, that's also necessary. अगर आपके पास capital नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मसला नहीं है भाई। देखें, there are many people who like you want to have some capital, then there are people who give the seed money. अगर आप business करना चाहते हैं तो you can get those seed money. चाहे आप जो है startups हैं, so you can approach different क्राउड सोर्सिंग आप अप्रोच कर सकते हैं, डिफरेंट सीड फाइनेंशियल्स होते हैं उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। सो यू हैव टू पुट फॉरवर्ड योर आइडिया। आपका जो भी आइडिया है यू थिंक इट्स वर्केबल, देन गो टू सच पीपल। ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें जो है आपको सीड मनी दे दी होती हैं, देन गवर्नमेंट लेवल पे भी सीड मनी दी जा रही होती है ना। दिस इज़ बेसिकली फॉर बिजनेस पीपल या एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप जो कि कुछ करना चाहते हैं। बट जो प्लेटफॉर्म्स पे जो है फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं वो तो जो है जाकर प्लेटफॉर्म ही एक्सप्लोर करें, उसके लिए उनको तो कोई जो है सीड मनी की ज़रूरत नहीं है। दे जस्ट हैव टू रिलाई ऑन देयर स्किल्स। सीड मनी की उनको ज़रूरत होती है जिन्होंने कोई बिज़नेस सेटअप करना होता है या कोई एंटरप्रेन्योर की फील्ड में होते हैं या बिज़नेस रिलेटेड कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड करना चाहते हैं। बट देन अगेन वो बिज़नेस जो कि आप विदाउट एनी पैसा करते हैं ना, दैट इज़ द बेस्ट बिजनेस दैट विच इज़ गोइंग टू टीच यू द स्किल्स। बट देन अगेन इफ़ यू वांट टू पुट इन सम मनी, देन पुट अ वेरी लेस अमाउंट, ताकि आप पहले जो है उससे कुछ अर्न कर सकें और फिर उसको मज़ीद जो है एक्सपैंड कर सकें। ओके, देन अगेन जो है ना, अगर हम सक्सेस और हार्डवर्क की बात करें तो जो आपकी हेल्थ और पर्सनल वेल बीइंग है ना, दैट इज़ दैट इज़ समथिंग विच इज़ सेपरेट। क्योंकि आपको जो सक्सेस मिलती है उसमें बहुत हद तक जो फैक्टर होता है वो आपकी हेल्थ और वेलनेस का भी होता है। लाइक इफ़ यू डू नॉट हैव अ गुड हेल्थ तो आप जो है ज़्यादा देर ना तो हार्ड वर्क कर पाएंगे, ना ही आप वो सक्सेस अचीव कर पाएंगे जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। सो उसको अचीव करने के लिए क्या ज़रूरी है, उसको अचीव करने के लिए ज़रूरी है यू नीड टू हैव अ बैलेंस वर्क एंड लाइफ बैलेंस। सो जिसमें जो है आपका जो है वर्क लाइफ भी हो और आपकी पर्सनल लाइफ भी हो। वो कहते हैं ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। सो सिमिलरली आपने भी यही करना है, आपने अपना वर्क एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस रखना है। जहाँ आपको फील हो, और आपको क्या फील होगा भाई, आपकी बॉडी खुद बताएगी आपको कि भाई आई एम गोइंग इन टू दिस डिफ़ॉल्ट मोड, शट डाउन हो जाती है। जिस तरीके से जो है कोई भी सॉफ्टवेयर जो है जब काम करना बंद कर दे तो वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। कंप्यूटर में, लैपटॉप्स में बहुत दफ़ा होता है हार्डवेयर का इशू आ गया तो कंप्यूटर जो कोलैप्स कर गया या विंडो उड़ गई, जिस तरह मोस्टली आप लोगों को पता होगा। सिमिलरली जो ह्यूमन बॉडी होती है वो भी बर्न आउट हो जाती है, शट डाउन कर जाती है। उसमें आपको जो पता चल जाता है आपकी बॉडी जो है मुसलसल आपको सिग्नल्स देती है किसी ना किसी फॉर्म में। कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन आपका जो है ना इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा। कैन बी योर ब्रेन, कैन बी योर किडनीज, कैन बी एनीथिंग। सो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर हेल्थ। वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, सक्सेस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट नथिंग लाइक दैट डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर हेल्थ। क्योंकि अगर जो है आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव योर गोल। सो ट्राई नॉट टू इतना एक्सट्रीम तक जो है कुछ भी पाने की कोशिश में ना चले जाएं कि अपने आप को ही आप जो है बलि का बकरा बना दें। ओके, देन ओके,
अच्छा, अगर हम जो है ना मज़ीद सक्सेस की बात करें ना, तो यू नो व्हाट, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और आप हर तरीके से मेहनत कर रहे होते हैं, जो जो तरीक़ेकार होता है आप उससे मेहनत कर रहे होते हैं, पर आपको सक्सेस नहीं मिलती। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि भाई आपकी मेहनत में कमी नहीं है, पर आपकी जो स्ट्रैटेजी है या आप जिस फील्ड में कर रही हैं, मे बी दैट इज़ नॉट को रिलेटिंग। सो उसमें आपने क्या करना है, यू नीड टू चेंज योर फील्ड। यानी फ़र्ज़ करें यू आर इनटू इनटू जस्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर में देखिए, मे बी देयर समथिंग विच यू लाइक मोर इन सॉफ्टवेयर। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन फोकस ऑन एआईज। मे बी आपको एआईज में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या आपको ऑटोमेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या यू वांट टू लर्न समथिंग अबाउट हाउ डाटा इज़ प्रोसेस्ड इन एआईज, या आपको साइबर सिक्योरिटी में जो है इंटरेस्ट है, या इवन डिजिटल मार्केटिंग भी लें। डिजिटल मार्केटिंग में कोई एक फील्ड थोड़ी है, यू कैन गो इनटू social media marketing, you can go into digital, then you can go into ads, then you can go into getting leads, yeah, how to engage clients, and then you can go into different platforms. Like there is so much you can do in these this is just a broad spectrum. So इनके अंदर भी जो है ना, यानी ब्रॉड नीच होती है, उसके बाद जो है स्पेसिफिक नीच होती है, फिर माइक्रो होती है नीच। सो देयर इज़ सो मच। अब आप देखें, इसकी जो है ना एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लाइक जिस तरह आप जो है ई कॉमर्स का स्टोर रन करें, अब ई कॉमर्स के स्टोर में क्या है, एक जनरल कैटेगरी है, लाइक मेकअप ले रहे हैं, ठीक है। अब मेकअप में आप देखें कि मेकअप कोई एक तरह का तो नहीं है ना, मेकअप जो है आपका फेस से रिलेटेड भी होगा, आपका आई से रिलेटेड भी होगा, आपके जो है ओवरऑल स्किन से रिलेटेड भी होगा, देन उसके अंदर जो है निटी ग्रिटीज़ होंगी। सो व्हेन यू आर डूइंग योर रिसर्च एंड यू आर सीइंग कि भाई लोगों को क्या चीज़ चाहिए, डिमांड में क्या चीज़ है, और डिमांड एंड सप्लाई वाले जो सिनेरियो होता है, सो यू आर एबल टू असेस कि ओके दिस इज़ वेयर माई my specific expertise lie, or this is what I like to do. Like there are many people who like to जिस वक्त वो स्किन केयर में जाते हैं, they like to focus on nails, या nails में जो है different जो है, अब तो बहुत ज़्यादा जो है acrylic nails आ गए हैं, and then acrylic nails में भी varieties हैं, then there are फैंसी नेल्स, और वैसे भी यूवी के साथ भी नेल्स हैं, प्लेन नेल्स भी हैं। सो देयर सो मच। So when you specify, okay, this is something which interests me and I like this, so you start doing it. So there is no such thing कि मैं ये कहूँ कि भाई अगर मेरी जो है फील्ड जो है जनरल है, तो कोई इसमें जो है माइक्रो नीश नहीं होगी जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं होगा। there are many things, so you have to look at these things which interest you, and you need to keep on working on those things. और देन ऑब्वियसली फिर इसमें जो है आपके जो है गोल्स भी चेंज होंगे, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू फोकस ऑन दोज नीचेस, यू आर गोइंग टू चेंज योर इंडस्ट्री। अगर आप ई कॉमर्स में आना चाहते हैं या ड्रॉप शिपिंग में आना चाहते हैं, तो देन यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद सप्लायर्स एंड रिटेलर्स, या जिस तरीके से जो है ड्रॉप शिपिंग की जाती है। सो दैट्स नॉट अ बिग डील, as long as you have interest in that thing, you can do that very easily. अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपके सर पे बेशक जो है ना लोग साइलेंसर लेकर जो है चढ़ जाएं, फिर भी जो है आप पे कोई असर नहीं होना। So you have to define yourself, you have to change your goals, and you have to define what success means for you. And then competition is always there, and बस ये जो चीज़ है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद पीपल अराउंड यू, क्योंकि देखें हर एक की जो जर्नी है ना वो डिफरेंट है। नो वन पर्सन हैज़ द सेम जर्नी। माई जर्नी इज़ टोटली डिफरेंट। आई माइट बी एट अ डिफरेंट स्टेज इन माई जर्नी, यू पीपल माइट बी एट अ डिफरेंट स्टेज, मैनी ऑफ यू माइट बी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सनस। So हम सबकी जर्नी डिफरेंट है, बट येस वी ऑल गो थ्रू दी same stages, and we need to learn from those stages, and we need to improve from those stages, and then we need to impart that relevant knowledge to people who are new in this field, rather than कि वो जो knowledge है या वो जो चीज़ें हैं जो हमने जो है बड़ी मुश्किल से सीखी, या हमें बड़ी मुश्किल से जो हासिल हुई, या पैसे दे देकर हमने सीखी, तो we need to impart those things to the people who do not have those benefits, या who do not have those resources to even gauge that knowledge. So rather than making
profits from whatever you're imparting. You need to disperse them openly with open heart, without thinking of having anything in return, with a good heart and with a good deed. क्योंकि ये जो deeds हैं ये आपको आखिरत में भी काम आएंगी. So ये deeds जो है इधर तो जो आप कर रहे हैं इधर भी आपके काम आएंगी जब लोग आपको दुआएं देंगे, और आखिरत में भी आपके काम आएंगी जिस तरीके से आप जो है अच्छा करना चाह रहे हैं लोगों के लिए. Okay, then as I have already told you कि whatever you're doing you need to maintain your work balance. अगर आप work balance और private life में balance नहीं करेंगे तो आप burn out हो जाएंगे, और burn out it's just going to get to your health, it's going to get to your productivity, and overall एक suffering cause होगी. ना सिर्फ आपको suffering cause होगी बल्कि आपके घर वाले या वो लोग जो कि आपसे मोहब्बत करते हैं या आपकी टेक केयर या केयर करते हैं वो सब जो है इफ़ेक्ट होंगे, just because you are burned out and you are unable to do anything productively. So this is what I wanted to discuss today, or now I'm just going to get back to the social media and see. Okay, so if you like today's topic, do let me know through your emojis, and अगर जो है आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझ ना आया हो तो you can always ask your questions in the inbox. Zamir Rodhani, Walaikum Assalam. Thank you so much for joining and watching this session. And if there's anyone who wants to come live, you have to come at the top of my camera so I can take you on camera. Okay. So I hope everyone enjoyed the Eid and you people had a lovely time on Eid. Okay. Well, inshallah I'll see you tomorrow. So let's see maybe let's see if I can take this session again early, rather than taking it at 8 p.m. or if 8 p.m. suits you, still you can let me know, and I'll just take that session. And then I have a surprise for you people, which I'm not going to tell today or tomorrow, but let's see. So till then, till tomorrow, I'll see you tomorrow. Till then, bye bye and take care. Allah Hafiz.